हाँ जी, हो गए सर। रामानंद आ रहे हैं सर। ठीक है सर, आ रहे हैं फोन आ रहे हैं। ऑर्डर में तो है वैसे सर, आ रहे हैं अब ऑलमोस्ट में। हम्म।
Yeah, yeah, yeah. Yeah, Mr. Good morning. I, on behalf of Pride and the participants, welcome the Honorable Speaker and Secretary General Lok Sabha to the Pride Main Lecture Hall. I will now request Secretary General of Lok Sabha, Shri Utpal Kumar Singh ji, to deliver the welcome address. Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla ji, officer trainees of the Indian Revenue Service, faculty of National Academy of Customs, Indirect Tax and Narcotics, Additional Secretary Shri Prasenjit Singh and members of Team Pride, ladies and gentlemen, it is a matter of great pleasure for all of us at the Lok Sabha Secretariat to welcome officer trainees of the 72nd batch of the Indian Revenue Service and the faculty at the National Academy of Customs, Indirect Tax and Narcotics to the Parliament of India for a 3-day appreciation course on parliamentary processes and procedures being organized by the Parliamentary Research and Training Institute for Democracies. I also take this opportunity to congratulate all officer trainees of Indian Revenue Service, Customs and Indirect Tax to their selection to one of the most prestigious of the central services in India. It is also a privilege to welcome Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla ji, here at Pride for an address to the IRS officer trainees. It has been the endeavor of Honorable Speaker to make Pride an internationally acclaimed capacity building institution on democratic systems and parliamentary procedures and practices, which would not only benefit the legislature, but also the executive and other organs of state. As such, training and capacity development programs of Pride have gained popularity among MPs and legislators, staff and officers representing a wide array of legislative bodies and organizations from India and all continents of the world. Friends, you are about to embark upon a career in the revenue service, which is so critical for the development and well-being of the nation. As revenue administrators, you will undoubtedly be tasked with ensuring compliance of a tax and duty regime without fear and favor. However, as India marches resolutely ahead to become a $5 trillion economy, your role as facilitators in the creation of a conducive environment where honest businesses feel protected and encouraged to operate and flourish without let and hindrance will be of critical importance. I have no doubt that many among you will be introducing innovative management practices and technological tools in your work areas to help bring about
greater efficiency, transparency, and ease of doing business in India during the Amrit Kal. As an important arm of the executive, you will be interacting with members of the legislature in real life situations. This 3-day appreciation course is designed to provide you with perspective on your role and responsibility vis-a-vis members of the legislature. The appreciation course hopefully would also try to help equip you with understanding of the nature of executive accountability to legislature in our constitution mandated scheme of parliamentary democracy and the way it plays out in your official engagement with parliamentarians and legislators. The endeavor is also to demystify the procedures and processes of parliament so that you are better sensitized about the pivotal role parliament and MPs play in our democratic polity. It is hoped that what you take back from here in the span of 3 days will be a better appreciation of what happens inside the portals of the highest temple of democracy in the largest democracy on planet Earth. I'm sure that the 3-day appreciation program will impart to you a better understanding of both the principle of checks and balances that informs relationship among organs of the state and also the symbiotic character of these engagements. It is therefore imperative that a nuanced understanding of the principles and procedures that guide this relationship is developed, as also the decorum and the code of conduct that informs this relationship is well appreciated. I'm certain that you will go back with enthusiasm to work with humility, determination, discipline, and in the spirit of public service that behoves a service as vital as yours to our nation as the Indian Revenue Service. With these words, I once again welcome Honorable Speaker Lok Sabha here at Pride and all participants to this appreciation course. I also wish all officer trainees a very bright future ahead in the service of the nation. Thank you. Thank you, sir. I now request Ms. Jaya Chitra K, Officer Trainee of IRS, C&IT, to share the batch profile of the 72nd batch of IRS with the dignitaries. Honorable Speaker, sir, other dignitaries and officer trainees of the 72nd batch of IRS Customs and Indirect Taxes, a very good morning. I, Jayachitra K, is here to present the profile of our batch. Sir, ours is a batch of 33 officer trainees who are here filled with pride and joy. Our training at Nasan Faridabad, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics began in December 2020. Sir, the Government of India has entrusted NASAN with the responsibility of knowledge sharing, experience sharing, and training with various countries of the world. I'm very glad to mention that 5 customs officers of Royal Government of Bhutan underwent training along with us for 1 full academic year from December 2020 to December 2021, after which they proceeded to their motherland to carry out their official duties. Training together, we were able to exchange the ideas that will help us serve our nations better. Our batch now has 26 men officer trainees and 7 women officer trainees. We have 23 engineers in our batch, 2 doctors, and others with a humanities background. Our batch has officer trainees from various states of our country with a maximum of 9 officer trainees from Uttar Pradesh, followed by 5 officer trainees from Rajasthan. We have 1 officer trainee each from Ladakh, Manipur, Odisha, Andhra Pradesh, and Kerala. Sir, after the completion of 1-year academic training at NASAN, all of us have proceeded for our on-the-job training at various central GST commissionerates across the country from December 2021 to April 2022.
From May 1st, 2022, we have assumed our independent charge as Assistant Commissioners of Central GST Commissionerates. We have come back to our parent academy for the last phase of our training, which is called the Furbisher course. On the 10th of this month, we will have our passing out parade, with which our probationary period will get completed and we will proceed to our respective commissionerates to resume our charge as assistant commissioners. Sir, we are aware of the Know Your Parliament program initiated by Honorable Speaker in September 2022. Through this parliamentary attachment, we will be better informed about the parliament, and I assure sir that we will also do our part to educate the youth and the students of our nation about the values and the principles enshrined in the Constitution of India. So it is an immense fortune that we got this opportunity to come to the hallowed halls of the parliament, from where our great leaders of the past and the present have made impeccable contributions to our nation building. Thank you, sir, for the opportunity given. Jai Hind. Thank you, Ms. Chitra. I would now request Honorable Speaker Shri Om Birla ji to inaugurate the program. संसदीय लोकतंत्र एवं प्रशिक्षण शोध संस्थान प्राइड वो संस्थान है जो देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसद की प्रक्रियाओं नियमों की जानकारी देने का काम करता है। भारत की संसद विश्व के विभिन्न देशों के संसद सदस्यों को, वहां के अधिकारियों को और विशेष रूप से भारत के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न संस्थाओं के लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करती है। भारत की संसद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी विशालता, विविधता भिन्न है, जो यहाँ भी झलकती है कि लक्षद्वीप से भी हमारा एक नौजवान आज जीएसटी कस्टम की राजस्व सेवा के अधिकारी के रूप में देश और राष्ट्र की सेवा करने का काम करे। आप सब पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देश के अप्रत्यक्ष टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज, जीएसटी हो, कस्टम हो, हमारे यहाँ टैक्स की जो दो प्रणाली है, उस प्रणाली में डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज, लेकिन अब इनडायरेक्ट टैक्सेज का भी बड़ा मत बन गया है। दुनिया के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत की संसद ने एक देश एक टैक्स प्रणाली जीएसटी की शुरुआत की। इसका विधेयक भी भारत की संसद से पारित हुआ और आज हम कह सकते हैं कि इसके पीछे मकसद ये था कि एक देश एक टैक्स हो, ताकि टैक्स में सरलता हो, नियमों में एकरूपता हो, नीतियों में एकरूपता हो और टैक्स देने वाले में विश्वास और भरोसा बढ़े। हम सब राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। हमारी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि जो आप राजस्व इकट्ठा करते हैं उससे देश के आर्थिक, सामाजिक जीवन में परिवर्तन आता है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने हमारे बजट को आज 41 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट देकर देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया युग शुरू किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, हमने बुनियादी सुविधाओं के रूप में और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर आर्थिक डेस्टिनेशन भारत बने, इसके लिए टैक्स नीतियों के अंदर सरलता, सुविधाजनक और पारदर्शिता लाने का काम किया है। आप सब नौजवान हो, आप 3 दिन तक यहाँ की संसद की प्रक्रियाओं, नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप आजादी के पहले, आजादी के बाद यहाँ पर जब संसद की लाइब्रेरी में जाएंगे तो समय समय पर
टैक्स नीतियों के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, रूल्स के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आजादी के बाद कब कब क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के पीछे क्या मकसद रहा, क्या उद्देश्य रहा, सरकार का क्या उद्देश्य रहा, और डिबेट और जो चर्चा हुई उसका सारांश आप पढ़ेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में क्लैरिटी आएगी कि उस समय उस कानून बनाने का क्या मकसद था, आज उस कानून बनाने का क्या मकसद है। हर सरकार ने टैक्स प्रणाली के अंदर पारदर्शिता है, जवाबदेही हो और टैक्स देने वालों का विश्वास भरोसा बढ़े। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जब दुनिया के अंदर हर देश आर्थिक रूप से ग्रोथ करने की दिशा की ओर काम कर रहे हैं, हर देश चाहता मेरा देश आर्थिक डेस्टिनेशन का बने, उद्योग लगे, इंडस्ट्री लगे, व्यापार लगे, पर्यटन, टूरिज्म, अन्य कई सेक्टर के अंदर अलग अलग देश बेहतर टैक्स प्रणाली को लाने का काम कर रहे हैं। उस समय क्योंकि भारत की विशालता विविधता भिन्न है, हमने भी दुनिया के अंदर एक बेस्ट टैक्स प्रणाली को लाने का काम किया है। आज हमें गर्व है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेज के अंदर कमी, इनडायरेक्ट टैक्सेज के अंदर भी सबसे नीचे का स्लैब रखकर जो आम व्यक्ति की जरूरत की वस्तुएं हैं, जो दिन प्रतिदिन की वस्तुएं हैं, उसमें समय समय पर संसद में चर्चा संवाद कर स्टेट होल्डरों से चर्चा कर किस तरीके से टैक्स स्लैब के अंदर परिवर्तन करें। उसके लिए आप देखेंगे जीएसटी के अंदर जब जीएसटी कानून लाया उसके बाद कितने परिवर्तन आए, कितने रूल्स में परिवर्तन आए। दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक होता है जो विधेयक पास होता है वो संसद में होता है, रूल्स बनाने का काम डिपार्टमेंट करता है। इसलिए रूल्स बनाने का काम भी इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए जो विधेयक पारित हुआ उसकी मंशा के अनुसार रूल्स बने नहीं बने, इसको देखना समझना, और क्योंकि आप भविष्य के वो नेतृत्व करना है जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी से टैक्स में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, टैक्स देने वालों का विश्वास भरोसा बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जीएसटी के बाद विभिन्न विसंगतियां रही, इन विसंगतियों को दूर करा, व्यापारियों से चर्चा की, टैक्स देने वाले अन्य स्टेट होल्डरों से चर्चा की और उसको बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आज भी बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उस समय जब आप अधिकारी के रूप में जाएंगे, आप चाहे छोटे अधिकारी हों, लेकिन हर व्यक्ति का सुझाव महत्वपूर्ण होता है। आप जब टैक्स प्रणाली के अंदर विधेयक लाने में, रूल्स बनाने में अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, अपने अधिकारियों को देंगे, समय पे सरकार को भी देंगे, ताकि हम दुनिया के अंदर, भारत के अंदर टैक्स प्रणाली को पारदर्शिता बना सकें, जवाबदेही बना सकें और टैक्स देने वालों का विश्वास भरोसा बना रखें। हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह आवश्यकता है टैक्स देने वालों का विश्वास भरोसा। अगर नियमों की जानकारी नहीं है तो समय समय पर उनको नियमों की जानकारी, कोई टैक्स एविजेशन बचाने का काम करता है जानबूझकर कुछ नियमों की जानकारी के अभाव में, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो देने वाला टैक्स देने वाला व्यक्ति है, अगर वह नियमों की जानकारी के अभाव के कारण कर रहा है तो हम उसको जानकारी देंगे। अगर वो टैक्स की चोरी करना चाहता है तो उस दिशा में काम करना पड़े। इसलिए एक सजग प्रहरी के रूप में सिविल सेवक मतलब जनता का सेवक, जनता का सेवक का क्या क्या दायित्व होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता का सेवक होता है, जनता की बातों को सुनता है, उनकी बुनियादों को सुनता है और संसद में अपनी बातों को, उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को रखता है। आपका डायरेक्ट व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, सर्विस टैक्स के लोगों से कांटेक्ट रहेगा। आप उनकी बात को सुनेंगे और उनकी नीतियां, पॉलिसी, कानून की जानकारी देंगे। मुझे आशा है कि आपका 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। जितनी आप
इस यहाँ पर अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में उतनी क्लैरिटी रहेगी आपकी सेवाओं के रूप में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और 3 दिन तक मुझे आशा है आप लाइब्रेरी और विभिन्न विशेषज्ञों के विचारों को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर. I will now request Srimati Kavita Bhatnagar, ADG NASIM, to present the mementos to the dignitaries. कितना साल हो गया आपको? ये मेरे 96 बैच से हूँ तो 26 ईयर, नासिन में भी 1 साल से। यहाँ 1 साल से। चलें हाँ। With this, we come to the end of the inaugural conference. Now I request Shri Prasanjit Singh Ji, Additional Secretary Lok Sabha, to deliver vote of thanks. आपकी बात है ना? Honorable Speaker, Lok Sabha, respected Secretary General, Lok Sabha, officers, trainees of IRS, Customs and Indirect Taxes, faculty members of NASIN, ladies and gentlemen, on behalf of Team Pride, it is my proud privilege to extend the words of gratitude on the occasion of appreciation course for the 72nd batch of officers trainees organized by Pride, which started in 1977. We are deeply obliged to Honorable Speaker, sir, for having our request to be with us today despite the ongoing budget session and his busy schedule to grace the inaugural session. Honorable Speaker has been a constant source of inspiration for all the endeavors in the working of the Pride, and we look forward for your guidance. Your presence here, sir, is indeed a source of motivation for us, and it